Okay, class. Today we are starting with the age of industrialization. Okay, we'll come back to this picture, and these figure 1 and figure 2, we will discuss it later. But let's first of all understand. So even when we were doing the making of global world, we said, okay, let me just start, put my video also on. Okay, so even when we were doing the making of global world, or we have even during nationalism in Europe, we have come across this concept industrialization. So we say that industrialization happened in which country for the first time? Britain. Britain, yes. And we say that after Britain, it was the Western Europe which followed industrialization. And not only in class 10th, but even in class 9th, we have studied about industrialization. When we were doing Russian Revolution, that Russia was the least industrialized, even at the beginning of the 20th century. So, क्या industrialization से पहले, before industrialization, was there no production for the world market? So there was. Yes, there was, because we have seen in the global world, or the making of the global world, that even before the modern times, there used to be exchange of goods and services across the world. तो हम associate करते हैं industrialization with the growth of factories and industries. And when we talk about industrial production, हम refer करते हैं factory production को. और industrial workers का मतलब हमारे लिए होता है factory workers, जो लोग factory में काम करते हैं. But there is a problem with this idea that even before the first factories which came in England and Europe, उससे पहले भी large scale industrial production हो रहा था for an international market. But ये जो production हो रहा है, ये factories में नहीं हो रहा. So this phase, historians now refer it to as proto-industrialization. What do they call it as? Yes, क्या कहते हैं इसे? Proto-industrialization. Yes, proto-industrialization. अब proto-industrialization है क्या, वो देख लेते हैं. And how production was organized during this period of time. तो आप देखोगे कि from 13th and 14th century, international trade started expanding. So in the 17th and 18th century, merchants जो हैं वो town से countryside की तरफ move कर रहे थे. They started moving to the countryside, और वहां पे वो क्या कर रहे थे? These merchants were giving money to peasants and artisans. और उनको बोल रहे थे कि वो इन merchants के लिए चीजों को produce करे. Now with the expansion of world trade, and Europeans ने बहुत सारे world के areas में colonies बना ली थी, so the demands for these goods started growing. But merchants cannot expand production within towns, क्योंकि अभी भी, even in the 17th and 18th century, what was the form of government, dominant form of government in Europe? Some monarchy. Yes, monarchy. यहाँ पे इसलिए because rulers granted monopoly to produce and trade in specific products. तो जो रूलर्स होते थे या मोनार्क्स होते थे, वो एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट को मोनोपोली दे देते थे कि सिर्फ वही लोग जो हैं इन चीजों में ट्रेड कर सकते हैं, इन चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स which was given the charter by the Queen Elizabeth और Queen Victoria. तो एक चार्टर दे दिया था कि ईस्ट इंडीज में सिर्फ यही मर्चेंट जो हैं वो ट्रेड कर सकते हैं. Only they can buy goods from there and they can sell British products over there. So what were these guilds? Guilds होता क्या है?
These were association of producers and trained craft people who controlled all the aspects of production. उनके कंपटीशन को, उनके प्राइजेस को, उसकी क्वालिटी को ये लोग जो है वो कंट्रोल करते थे. So it was difficult for the new merchants to set up business in towns. इसलिए शहर जो थे उसमें नए मर्चेंट्स अपना बिजनेस या व्यापार सेटअप नहीं कर सकते थे. And in the countryside, the poor peasants, we have already seen, we are during nationalism in Europe, that peasantry was poverty ridden in Europe. There was a lot of poverty. So these poor peasants and artisans started working for the merchants. और ये वो टाइम पीरियड भी था जब कॉमन लैंड्स खत्म होते जा रहे थे. जो लैंड ओनर्स थे वो क्या कर रहे थे? फेंसिंग. यू अंडरस्टैंड व्हाट फेंसिंग इज? Yes, sir. हाँ, तो उन्होंने क्या किया, पहले ना कॉमन लैंड होता था गांव में. अगर आज भी आप जाएंगे तो कुछ जगह ऐसी होगी जो किसी की जमीन है बट उस पे कोई खेती भी नहीं करता. लोग अपने जानवरों को लेकर चले जाते हैं चराने के लिए. ठीक है, यहाँ पे देखिए, why commons were used by these poor peasants. Earlier they had depended on common lands for their survival by gathering firewood, berries, vegetables, hay and straw for their animals. But now, because of closing of common lands, they had to now look for alternative sources of income. And many peasants had very small plots of land which could not provide work for all members of the household. So what kind of unemployment is this? Sir, disguised unemployment. Yes, very good, Harsh. This is disguised unemployment. So when merchants came around and offered advances to produce goods for these merchants, they happily agreed. Because now, if the meeting gets over, you will have to rejoin, okay, and join quickly. So when merchants came around and offered advances to produce goods for them, they happily agreed. Now you can look in the figure 3 that the wife or the lady of the house is spinning. The grandmother is also helping in the production. The little kid is doing some of the household's core. So you can see each member of the family was involved in the production of yarn. And here you can see अभी भी जो method है production का, that is primitive. सिर्फ एक धागा बन रहा है. Only one spindle. Okay? अभी हम देखेंगे technological advances भी देखेंगे जो हुए. By working for the merchants, now if I ask why these peasants started working for the merchants, the first reason हम already देख चुके हैं, that the common lands were disappearing. The second reason is they could remain in the countryside. अब उन्हें कहीं शहर में नहीं जाना पड़ेगा काम करने के लिए, वो अपना गांव में रह सकते हैं, साथ ही साथ अपनी खेती भी कर सकते हैं, एंड थोड़ा एडिशनल इनकम भी हो जाएगा. So income from proto-industrial production supplemented their shrinking income from cultivation. At the same time, they are making use of their family labor resources. So they are trying to get out of the disguised unemployment. Okay. Now within this system, what is this system? What do we call this system? Sir, proto-industrial production. Yes, proto-industrial production. तो यहाँ पे आप देखोगे that there is a close link between the towns or urban areas and the countryside. अगर आप देखोगे तो आज भी यही है. आज भी. Now Delhi is an urban city. Athar? Yes, sir. Okay. Tanishq, 10A. Can Delhi function without the use of resources from rural areas? No, sir. No. Yes, exactly. हमारा देखो जितनी भी सब्जी आती है, फल, फ्रूट आते हैं या बाकी चीजें हैं, मीट प्रोडक्ट्स हो गए. Sir, सारे states interdependent है ना. Yes, resources के मामले में all the states are interdependent. Very good.
रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से आपने इसको लिंक कर लिया, वेरी गुड. सो सोशल स्टडीज आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग यू इट्स कॉम्प्रिहेंसिव. ऐसा नहीं है कि जो आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो उसका कोई रिलेशन नहीं है हिस्ट्री में, या जो व्हाट यू स्टडी इन हिस्ट्री डज नॉट हैव अ लिंक विद ज्योग्राफी. नाउ मर्चेंट्स वर बेस्ड इन टाउन्स. मर्चेंट्स व्यापार शहरों में करते थे, बट प्रोडक्शन कहां हो रहा था? Countryside. Countryside, very good. So a merchant clothier in England, वो किसी एक स्टेपलर से वूल खरीदता था, फिर उसे लेके जाता था स्पिनर्स के पास. नाउ स्पिनिंग, अच्छा अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तो नहीं किया होगा. No, sir. No, sir. No, Okay, when sir. you will do that, you will come across the different steps which are there in the production of fabric. रॉ कॉटन से फैब्रिक बनाने तक उसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं. पहले आप रॉ कॉटन की गिनिंग करते हो. गिनिंग का मतलब है उसमें से सीड निकालते हैं, फिर उस कॉटन से हम धागा बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, और वो भी डिपेंड करता है कॉटन की क्वालिटी के ऊपर कि धागे की क्वालिटी क्या होगी. देन वी टेक इट टू द वीवर. नाउ वीवर क्या करता है? वो धागे से कपड़ा बनाता है. देन फुलर्स, and then dyeing. The finishing was done in London before the export merchants sold the cloth in the international market, and London becomes a finishing center. अब क्या होता था? प्रोडक्शन होता था कंट्री साइड में. Finally, the product was brought to London where it was finished, and from there it was exported to different parts of the world. This proto-industrial system was a part of network of commercial exchanges. It was controlled by merchants and the goods were produced by a number of producers. जो कहां काम कर रहे हैं? They are working in their farms, they are working in their houses and not in Factories. yes. तो आप देखोगे हर स्टेज पे 20 से 25 वर्कर्स जो हैं वो एक मर्चेंट के लिए काम कर रहे होते थे. At each stage 20 to 25 workers were employed by each merchant. इसका मतलब है कि कोई उस जमाने में एक मर्चेंट जो कपड़ा बना रहा है और बेच रहा है, कम से कम भी उसके लिए 100 से ज्यादा लेबर या वर्कर्स काम कर रहे होते थे. Now let's see how this proto-industrial production changed. Now this system, for this system to change, obviously we will have to set up factories and industries. So the first factories came up in the England by 1730s, but it was only in the late in 18th century कि अच्छा चलिए देखिए टेक्नोलॉजी या कोई भी नया चेंज आने में टाइम लगता है. पहले इंट्रोडक्शन से लेके उसके फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होने से लेकर to be accepted and then to expand, it takes time. So earliest factory came in the 1730s, but it was only in the late 18th century that the number of factories multiplied. And we have also discussed at many times that the first symbol of the industries was Coming of factories. no coming of factories, but factories में सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं? The cloth. Yes, cotton, कपड़ा. और आप देखो 1760, in 1760 Britain was importing 2.5 million pounds of raw cotton. कितना इंपोर्ट कर रहा था? 2.5 million pounds. ठीक है. By 1787 यानी within 17 years कितना हो गया? कितना इंपोर्ट कर रहा है अब? 22 million pounds. 22 million pounds. अगर मैं इसको एक रफ एस्टिमेशन करूं तो जो इंपोर्ट है रॉ कॉटन का, that has gone up by 10 times. मैं उसको 2 million मान लेता हूं, इसको 22 million मान लेता हूं, तो 11 times हो गया.
So what does this mean? What can we conclude from this? अगर कंट्री में रॉ मटेरियल ज्यादा आ रहा है, what do we understand by this? That it is a favorable balance of trade. Favorable balance of trade तो है, but साथ ही साथ the production has increased. Now more cotton cloth is being produced in the country, है ना? Yes, sir. तभी तो इंपोर्ट हो रहा है. देखो रॉ मटेरियल, घर में 2 लोग हैं चाय पीने वाले, तो आधा लीटर दूध से भी काम चल जाएगा. बट अगर लोग ज्यादा आ जाए, कोई फंक्शन है घर में, चाय पीने वाले लोग ज्यादा हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें मिल्क ज्यादा चाहिए. सो Yes, sir. जब हम पहले प्रोडक्शन कम होगा, इसीलिए 2.5 मिलियन पाउंड्स मंगवा रहे थे, अब 22 मिलियन पाउंड्स मंगवा रहे हैं. इसका मतलब है प्रोडक्शन ऑफ कॉटन और फैब्रिक हैज इंक्रीज्ड. बट व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द इंक्रीज? सो लेट अस लुक एट द फैक्टर्स. सबसे पहले तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. A series of inventions increase the efficiency of each step of the production process. कुछ इन्वेंशंस हुई, कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया. दे एनहांस द आउटपुट पर वर्कर. अब हर वर्कर जो है वो ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, which made the production of stronger threads and yarns. तो उसमें से पहली इन्वेंशन थी रिचर्ड आर्कराइट का कॉटन मिल. इससे पहले तक अभी आपने देखा, जब हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन डिस्कस कर रहे थे, दैट क्लॉथ प्रोडक्शन वाज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री साइड एंड वाज डन इन द हाउसहोल्ड्स. बट अब क्या हो रहा है, दैट दीज बिग बिजनेसमैन एंड मर्चेंट्स स्टार्टेड बाइंग कॉस्टली मशीन्स, और उनको एक जगह पे